Good morning, 9th class students. Welcome to your bio lecture, chapter number 5, Cell, the fundamental unit of life. As you all know that bio is one of the important branch of science. So here is your first lecture regarding the cell. Cell, which is the fundamental unit of life. Cell is also known as the structural and functional unit of all the living organisms. Right? Now, cell. अब आप सभी सोचेंगे कि सेल जो कभी दिखाई नहीं देता. Cell are very tiny organisms that we people cannot see with our naked eyes. I will give you one more example. जैसे कि एक बिल्डिंग को बनाने के लिए छोटी छोटी ईंटों की आवश्यकता होती है. All the little bricks combine to form a big building. In the same way, small cells, all the cells combine to form a complete body of a living organism. So that is why the cell is known as the smallest unit of life. Okay. Now, the cells can live independently also and in a group also. So living organisms are made up of cell and they start their life as a single cell. They have their own lifespan. Now you can say the structure of the cell in onion peel. Now what is onion peel? For example, this is an onion. Look, you can see the diagram of onion. And if we cut a single part from here, we can see we are making a temporary stain mount of onion. This is a small activity through which, अगर देखो मैं आपको समझाती हूँ कि ये ओनियन है. ओनियन के अगर एक स्लाइस लेके हम कट करके सेंटर में एक पतली सी बहुत थिन लेयर निकलती है, which is known as the thin membrane from the inner side of the layer of the onion. And if we transfer that layer on this cover, this is a slide. This is a slide, right? हमने क्या करना है, वो थिन लेयर को इस स्लाइड के ऊपर रख कर एक थिन कवर स्लिप से कवर करने से पहले मिथिलिन ब्लू एज अ स्टेन डालना है. Methylene blue is a stainer which can stain all the cells of this membrane. And by putting the cover slip with the help of the needle so that ki air bubble enter na ho jaye. And after the complete procedure, we can see this in a microscope. And after judging in the microscope, we can see the structure of cell like this. So this is the structure of cell in the onion peel. You can very well see the cell wall, nucleus. All black dots are known as nucleus. Having vacuoles, cytoplasm, right? So, this is a complete structure of the cell in a onion peel. Onion peel जो जिसको कि हम प्याज कहते हैं बेटा जी. And we all are consuming in our daily routine, in our food. So the cells are also present in this and it looks like this, right? Even we can see the structure of human cheek cell. Cheek cell means within your mouth, if you rinse your mouth with a warm water, अगर आप गर्म पानी से अपने माउथ को रिंस करते हो और टूथपिक से या आइसक्रीम पिक से अगर उसको स्क्रैप करते हैं तो इनर साइड, हमारी चीक की इनर साइड से क्या होगा, एक थोड़ी सी थिन लेयर निकलती है. उस थिन लेयर को हम सेम उसी तरीके से स्लाइड पे रखेंगे, कवर स्लिप रखेंगे, उसके ऊपर मिथिलिन ब्लू एज ए स्टेनर डालेंगे तो आप देख सकते हो कि ह्यूमन चीक सेल में भी ये वाले सेल्स नज़र आते हैं, right? This is plasma membrane. The outer covering is known as plasma membrane. Nucleus is within it, right? With a cytoplasm. So what I want to tell you is that the cell present everywhere. Cell is present. It is the basic functional and structural unit of life. Now, you think about who discovered the cell? Discovery of cell.
discovery of cell. So the scientist named Robert Hooke in 1665 discovered the cell. It is with the help of the crude microscope prepared by him. रॉबर्ट हुक ने खुद एक क्रूड माइक्रोस्कोप प्रिपेयर किया था, ठीक है, और उसने क्या किया, ही ऑब्जर्व द स्लाइस ऑफ कॉर्क. Slice of cork is obtained from a bark of tree. Now you can see the slice of cork, C-O-R-K. Now what is cork? It is bark of tree, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं किसी भी पेड़ की छाल. The outer covering of any of the tree with a bark outside it. So what the Robert Hooke did, Robert Hooke studied this bark of the tree, and with the help of the crude microscope prepared by the Robert Hooke, he judged and observed that it is made up of number of boxes. It seems like this. The honeycomb-like structure has been observed by the Robert Hooke in the bark. Right? And he named them as a compartment or the boxes of honey-like structure. And he called these compartment as a cell. So from here, the name discovery of the cell takes place. That रॉबर्ट हुक ने जब देखा कि पेड़ों की छाल में, जब उसने अपने क्रूड माइक्रोस्कोप से जज किया, उसने देखा ये तो कंपार्टमेंट है, ये तो छोटे छोटे घर बने हुए हैं, ये तो हनीकॉम्ब के जैसे दिख रहा है, तो ये क्या है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट क्या है, ये लिटिल रूम्स को उसने नाम दिया सेल. और लैटिन भाषा में सेल का मतलब होता है लिटिल रूम. लिटिल रूम ये हम लैटिन भाषा में कहते हैं. सेल का मतलब ही होता है लिटिल रूम. और इन छोटे छोटे घरों को रॉबर्ट हुक ने सेल का नाम दे दिया, और यहाँ से सेल की डिस्कवरी हुई है. इन द सेम वे मैनी डिफरेंट साइंटिस्ट हेल्प्ड रॉबर्ट हुक. एंटोइन वॉन लीवनहॉक ने बताया कि कैसे सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, पॉन्ड, बैक्टीरिया, स्पर्म सेल्स. रॉबर्ट ब्राउन ने भी डिस्कवर किया. J.E. परकिंजी ने हेल्प किया. राइट? इन द सेम वे ऑल डिफरेंट साइंटिस्ट हेल्प रॉबर्ट हुक अबाउट इट. आफ्टर दैट एक सेल थियरी निकाली गई, एंड अकॉर्डिंग टू दिस सेल थियरी, नंबर 1 कि सेल इज नोन एज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स. सेल को क्या माना गया? बेसिक यूनिट ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स. सभी प्लांट्स और एनिमल्स का बेसिक हिस्सा माना गया. अलॉन्ग विद दैट, बेसिक यूनिट ऑफ फंक्शन एज वेल एज मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस इनसाइड द सेल. सभी मेटाबॉलिक रिएक्शंस में भी सेल का बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट था. After that, cell is also known as the unit of heredity. यूनिट ऑफ हेरिडिटी का मतलब बेटा आप लोगों के लिए बिल्कुल नया शब्द है हेरिडिटी. हेरिडिटी मीन्स हेरिडिटरी मटीरियल इनसाइड द न्यूक्लियस. ये वो मटीरियल है जिसके द्वारा जो किड्स हैं दे आर सेम एज ऑफ देयर पेरेंट्स. द हेरिडिटी मटीरियल हैज़ बिन ट्रांसफर्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग्स. राइट? अपने माता पिता के जैसे बच्चे का होना भी सेल के कारण ही पॉसिबल है. Right? So this cell theory was given by the scientist, zoologist Theodore Scaven and Rudolf Virchow. Right? And with the help of all these things, you can judge. So today's your task is to study about the cell. You just open your science book, open chapter number 5, go through the chapter. Read the complete theory part which is given in NCERT book. Go through the paragraph wise paragraph. And if you have any problem about the introduction of the cell, you can ping me out in my personal inbox. Thank you.